Hello everyone, this is Divya Chandwani, your English educator, and in today's video, I will be teaching you second chapter, that is Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Yes, my dear student, this is one of the lengthiest and most difficult topics of your book, First Flight, but in today's video, I'll make it very easy for you. So let's get started. This chapter, as the title tells about the main character, that is Nelson Mandela. He became the first black president of South Africa because there was apartheid system. Apartheid यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहां पे racial discrimination होता है. Racial discrimination is discrimination which is on the base of the color, which is based on the color. तो जो blacks थे उनके ऊपर whites बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे. That means whites were the oppressors and the blacks were the oppressed people. So what Nelson Mandela did? Nelson Mandela joined ANC. ANC क्या है? African National Congress Party उन्होंने join करी. He fought for his people, he fought for his brothers and sisters, for his countrymen, and उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और इतने सालों के स्ट्रगल के बाद उन्होंने ये अपार्थाइड सिस्टम हटाया. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब डेमोक्रेटिक तरीके से नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही थी जो कोई भेदभाव नहीं करेगी अमंग्स व्हाइट्स एंड ब्लैक्स. और क्योंकि अब नेल्सन मंडेला बन चुके थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, सो इट वाज द इनॉग्रेशन डे, क्योंकि आज उनका जो है स्वेरिंग इन सेरेमनी होने वाली थी जहां पे वो ओथ लेने वाले थे. अब बच्चों ये इनॉग्रेशन जो डे था ये किस दिन की बात है? This inauguration day was on 10th of May. 10th of May पे इनका इनॉग्रेशन डे था जहाँ इन्हें कसम खानी थी कि मैं अपनी कंट्री के लिए जो भी करूंगा दैट विल बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ माय कंट्री. सो दैट वाज 10th of May. और ये कहाँ हो रहा था? इट वाज इन एन एम्फी थिएटर. एम्फी थिएटर मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जिसका रूफ जो है वो ओपन होता है. एंड दिस एम्फी थिएटर वाज इन अ प्लेस कॉल्ड प्रिटोरिया. इट ऑल वाज हैपनिंग इन प्रिटोरिया. दिस इज द नेम ऑफ द प्लेस. 10th में इनका इनॉग्रेशन डे था. नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? अब इनका स्वेरिंग इन सेरेमनी था जहां पे इन्हें कसम खानी थी दैट ही विल बी अ गुड प्रेसिडेंट, ही विल डू गुड फॉर हिज पीपल. तो स्वेरिंग इन सेरेमनी जब आप कसम खाते हैं उस दिन की बात है. अब इनके साथ उस दिन और कौन कौन से लोग आए थे? कौन कौन आए थे बेटा? ऑलमोस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सब आए थे नेल्सन मंडेला की स्वेरिंग इन सेरेमनी देखने. बिकॉज इन द हिस्ट्री इट वाज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम जब साउथ अफ्रीकन सॉइल पे कोई डेमोक्रेटिक तरीके से नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन गई थी. तो टू जस्ट शो देयर रिस्पेक्ट, ऑल दीज लीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड दे हैव ट्रैवल्ड टू द साउथ अफ्रीकन सॉइल. अब नेल्सन मंडेला जी के साथ कौन आई थी? उनकी डॉटर ज़ेनानी आई थी. So he was accompanied by his daughter Zenani, and then we have Mr. D. Clerk who sworn in as the second deputy president. इन्होंने कसम खाई. And Thabo Mbeki जी ने कसम खाई and sworn in ceremony करी as the फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. तो ये सब चीजें हुई थी स्वेरिंग इन सेरेमनी वाले दिन. एंड नेल्सन मंडेला could remember all his struggling days where when he was put in jail, where they struggled so much to get their country and their countrymen free. And when he was doing his swearing in ceremony, जब वो कसम खा रहे थे, जब वो sworn in कर रहे थे, तब भी उन्हें क्या याद आया? He could remember all the struggles and the contribution of his South African leaders, जो उन लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी और जो struggle करा था for their country people. तो उन सब लोगों को याद करते हैं कौन? नेल्सन मंडेला जी. किसको याद करते हैं? दैट ब्यूटीफुल इमेज इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. डू नॉट फॉरगेट टू हैव अ लुक एंड डू नॉट फॉरगेट टू जस्ट रीड द नेम्स वंस. नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? उसके बाद बच्चों वो क्या करते हैं? नाउ व्हेन ही वाज डूइंग द स्वेरिंग इन सेरेमनी, उस टाइम पे एक और चीज होती है. ऑल दी मिलिट्री जर्नल्स दे ऑल वर सल्यूटिंग मिस्टर नेल्सन मंडेला. अब नेल्सन मंडेला जी को ये याद है, अगर कुछ साल पहले की मैं बात करूं तो यही बड़े बड़े मिलिट्री जर्नल्स या पुलिस वाले लोग मुझे अरेस्ट कर लेते just because I was a black and I was protesting against all these all this apartheid system. लेकिन आज ये सारे बड़े बड़े मिलिट्री जर्नल्स जिनके पास इतने बड़े बड़े मेडल्स थे, they all were saluting Mr. Nelson Mandela. After all, he was the president of the country and they wanted to show their respect and loyalty towards the government.
तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए सब लोग मिस्टर नेल्सन मंडेला को सल्यूट कर रहे थे एंड एट द सेम टाइम क्या हो रहा था, these impala jets what do they लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल। इन लोगों ने क्या करा, एक स्मोक ट्रेल छोड़ा, ठीक है। स्मोक ट्रेल से जो कलर्स बाहर आ रहे थे, जो धुआं बेटा ये इम्पाला जेट्स छोड़ रहे थे, इनसे, इन कलर्स से क्या बन रहा था, अ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग was made by the colors that were released by these impala jets। तो ये न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग जो बनाया गया, जो मिलिट्री जर्नल सल्यूट कर रहे थे, इम्पाला जेट्स जो स्मोक ट्रेल रिलीज कर रहे थे, ये सब कुछ क्यों हो रहा था, जस्ट टू शो देयर लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द न्यू डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट दैट वाज मेड। एंड वन थिंग दैट मिस्टर नेल्सन मंडेला टोल्ड एवरीवन दैट डे, वो मैं आपको बताती हूँ, टू नेशनल एंथम्स वर संग दैट डे। ये दो नेशनल एंथम कौन से थे बच्चों, one was Nkosi Sikelal, which was sung by the whites, and the other one was Die Stem. Die Stem was sung by the blacks. Nelson Mandela said that two national anthems were sung because nobody knew each other's lyrics that day. But he said, I am pretty sure, मैं बिल्कुल sure हूँ that one day everyone will be able to remember the lyrics। हर इंसान को हमारे नेशनल एंथम के लिरिक्स याद होंगे, जितने भी साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोग हैं, बिकॉज देन वी ऑल विल बी यूनाइटेड एंड कनेक्टेड। आज हम बहुत बड़े अपार्थीड सिस्टम को पीछे छोड़ते हुए एक हुए हैं। सो इट विल टेक टाइम बिकॉज दिस वुंड इज गोइंग टू लास्ट फॉर एवर मे बी, बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज है, इतने सालों तक ब्लैक्स के साथ अत्याचार हो रहे थे। सो व्हाट हैपेंड दैट डे, टू नेशनल एंथम सॉन्ग्स वर सung, one was Nkosi Sikelal, the other one was Die Stem, and nobody remembered each other's lyrics। Now what happened next, what did he say, he remembered all these people who contributed in removing this apartheid system। He wanted to thank all of them। And two most important things that I would like to tell you, Nelson Mandela always believed that love is something that comes naturally to all us human beings, hatred is something that is taught to us by the people with whom we live in the society। He remembered that day that when he was in jail, he could see goodness and humanity in one of the guards of the jails also। So that means that's very clear that we all are born and we are taught to love, but we all have this feeling of humanity for each other, but hatred is something that is taught to us by the society। And the second most important thing that I would like to tell you is that what is the definition of courage according to Mr. Nelson Mandela। So he always felt that courage is not something, or courageous is a person who is courageous, that does not mean that he is very bold and brave, but courageous means, or the definition of courage is, if you have the guts to overcome your fear, so that is the correct definition of courage according to Mr. Nelson Mandela। So now let's have a look and let's see what he spoke about the oppressor and the oppressed। So who were the oppressor? The whites were the oppressor, क्योंकि वो अत्याचार करते थे, और oppressed कौन थे? The blacks were the one जिनके ऊपर ये अत्याचार हो रहे थे। But according to him, oppressor and oppressed, they both are robbed of humanity। Now why they both are robbed of humanity? Because oppressor जो लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, somebody who is spreading hatred or is doing bad to people, they themselves are not they themselves are robbed of humanity। और उनका जो है, उनको खुद को एक अच्छी से नींद नहीं आती होगी, बिकॉज वो खुद इतना लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। सो देर इज नो as such a peaceful life for the oppressors also। So Nelson Mandela used to believe that oppressor and oppressed, they both are robbed of humanity। Okay, so when he joined ANC, African National Congress Party, he made sure that all the people those who are suffering because of lack of rights in South Africa, so he'll make sure that when this non-racial government will be formed, he will not discriminate between anyone on the basis of caste, color and creed। And Mr. Nelson Mandela used to believe that there are twin obligations for a person। First obligation is towards your family, your parents, your wife and children, and the other obligation is towards your country, your countrymen। So this is what Mr. Nelson Mandela used to
believe in. So yes, on this note, I have described the chapter in very crisp way to all of you. So I hope you were able to understand that. Now let's move towards the questions that are very, very important and can come in your board exams, because they were asked in the previous board papers also. So the first question is on your screen, and that is, what does Mandela refer to as an extraordinary human disaster? That was asked in year 2020. So what is an extraordinary human disaster? So what you have to write is, Mandela refers to अपार्थीड सिस्टम, अपार्थीड जो सिस्टम था उसको उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बोला था. इसे आप फ्रेम कैसे कर सकते हैं? मंडेला रेफर्स अपार्थीड सिस्टम एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर because it created an everlasting wound in the lives of the people of South Africa. So yes, that will be the answer for this question. Next is, what are the twin obligations referred to by Nelson Mandela? Now what are the twin obligations? इस question का मतलब क्या है? Obligation means duties. So ऐसी दो कौन सी ड्यूटी हैं जो एक इंसान को निभानी पड़ती है अपने कंट्री के एक अपनी लाइफ में? So what you will write, the twin obligations referred to by Nelson Mandela are, first is towards your family. For example, your parents, your wife, and your children. And the other duty that we all have is towards our country and countrymen. And guys, do you know my students, that how did he उनके अंदर ये हिम्मत कैसे, या हाउ ही गॉट सो इनकरेज टू जॉइन ANC एंड टू मेक हिज कंट्री फ्री? ये सब ताकत उनके अंदर कैसे आई? बिकॉज व्हेन ही वाज अ किड ही नेवर वांटेड फ्रीडम, बिकॉज फॉर हिम फ्रीडम वाज जस्ट रोमिंग इन द फील्ड्स, swimming in the near river, so that was freedom for him. But when he grew up, when he was a man and when he was living in Johannesburg, उन्हें समझ में आया कि definition of freedom is something else for me. Now I want to live freely, but because I am a black person, I'm not allowed to do that. So definition of freedom kept on changing. When he was a kid, he just wanted to roam in the fields, but when he grew as a man, he wanted something else. And when he grew up, when he was an adult, he understood that the shackles that are on my brothers and sisters, that are on my countrymen, जो बेड़ियां मेरे लोगों के ऊपर है, वो actually मेरे ऊपर भी हैं. So now it's my duty. I will work hard. I will make sure that I will make my country free. We all will make our country free, and we will try our level best to remove. My government will try our level best that we will live them a life of dignity, peace, and justice, because they have suffered a lot. So now it's our responsibility to take them out of those sufferings and the discrimination that they have faced. So yes, my dear students, on this note, we have completed the chapter and few important questions that might come in your boards or your pre-boards. So if you like this video and if you want more such videos, then do not forget to let me know in the comment section. Like this video of Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, and please subscribe to Unacademy 9th and 10th. Thank you.